Assalamu alaikum dear students, and I welcome you all in fourth lecture of second week, and we were reading chapter number 5, that is History of Pakistan 2, and we were discussing about main aspects of economic reforms during 1971 till 1977, and we have learnt about nationalization of industries, सनतों की इस्लाहात पढ़ी थी, nationalization of banks and insurance companies, labor reforms. We have learned these three reforms during 1971 and 77. Today we will start agricultural reforms. आज हम ज़रई इस्लाहात के बारे में पढ़ेंगे. Remember one thing, Pakistan is an agricultural based country, so most of the population of Pakistan depends on agriculture sector. Agriculture is the profession of majority of population in Pakistan. To save the farmers from the exploitation, Bhutto's government announced some reforms during that time period. Pakistan's population depend on the production of agriculture, so to save the farmers from the exploitation, unfair treatment, Bhutto's announced some changings. So the first one was the limit of land ownership irrigated by canal was fixed up to 150 acre and the land irrigated by natural rain was up to 300 acres. The land beyond these limits was confiscated and distributed among the farmers and the peasants. By March 1976, 1.5 million acre of land was distributed to the farmer. हुकूमत ने एक पहली जो तब्दीली की वो ये थी कि ज़मीन के जो मालकान हैं वो सिर्फ़ 150 एकड़ नहरी पानी से काश की जाने वाली ज़मीन ख़रीद सकते हैं और बारानी ज़मीन जो कि बारिश के पानी से काश की जाती है सिर्फ 300 एकड़ तक ख़रीद सकते हैं. और अगर कोई इस लिमिट से ज़्यादा की ज़मीन ख़रीदेगा तो वो गवर्नमेंट किसानों और मज़ारैन के दरमियान तकसीम कर देगी. और 1976 तक 15 लाख एकड़ ज़मीन जो है वो किसानों के दरमियान तकसीम की गई. The land purchased by the government servant during their services for 2 years after their retirement was limited up to 100 acres. The surplus excess land would be taken over by the government. The army officers were exempted from this policy. Exempted mean relief. जो हुकूमत के जो मुलाजमीन हैं, हुकूमत के इदारों में जो काम करने वाले लोग हैं, वो हुकूमत की जॉब के दौरान अगर वो गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं उस दौरान और अपनी रिटायरमेंट के 2 साल के बाद वो सिर्फ़ 100 एकड़ की ज़मीन ख़रीद सकते हैं. इससे ज़्यादा की जो भी ज़मीन ख़रीदेंगे वो गवर्नमेंट ले लेगी और उसको मज़ारैन के दरमियान तकसीम कर देगी. और आर्मी इस महदूद से, इस कानून से मुस्तस्ना होगी, रिलीफ होगी. नो वन एक्सेप्ट फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वॉज अलाउड टू क्रॉस द लिमिट ऑफ लैंड. सिर्फ तालीमी अदारे इस महदूद को क्रॉस कर सकते हैं, इस लिमिट को क्रॉस कर सकते हैं और कोई अदारा क्रॉस नहीं करेगा. ओनली लैंड लॉर्ड वुड पे द लैंड एंड वाटर टैक्स टू द पेजेंट्स वुड बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इट. सिर्फ ज़मींदार ही पानी का और ज़मीन का टैक्स अदा करेंगे, जबकि किसान जो है वो इससे मुस्तस्ना होंगे, इससे रिलीफ होंगे. एग्जेम्प्टेड मीन रिलीफ. नो एक्स्ट्रा लैंड वॉज अलाउड फॉर द लाइफ स्टॉक फार्म, स्टेबल्स एंड गार्डन्स. मवेशियों के फार्म्स के लिए, हॉर्स फार्मिंग के लिए और गार्डन्स के लिए, कोई बागात के लिए एक्स्ट्रा ज़मीन मुख्तस नहीं की जाएगी. ऑल हंटिंग ग्राउंड्स एक्सेप्ट फॉर दोज विद द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वर टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट. सो तमाम शिकारगाहें हुकूमत ने अपनी मलकियत में ले ली, अलबत्ता तारीख़ी नोयत की शिकारगाहें हुकूमत ने छोड़ दी, मुस्तस्ना कर दी. And the landlords were not allowed to evict the peasants one-sidedly. Landlords are not supposed to expel out or force out or terminate the peasants one-sidedly. Only those peasants could be evicted who did not give apportionments or violated the rules. सिर्फ उन्हीं किसानों को निकाला जाएगा जो ड्यूटी परफॉर्म नहीं करेंगे और वायलेटेड मीन ब्रेकिंग, रूल्स की जो ख़िलाफ़ वर्जी करेंगे, कानून की ख़िलाफ़ वर्जी करेंगे, उन्हें निकाला जाएगा. मालकान को यकतरफ़ा तौर पर मज़ारैन को बेदखल करने के हक़ से महरूम कर दिया गया. सिर्फ बटाई ना देने वाले जो हिस्सा नहीं दे रहे, अपना काम प्रॉपर नहीं करेंगे या मसलमा शराइत की या कानून की ख़िलाफ़ वर्जी, जो शराइत तय की गई उनकी ख़िलाफ़ वर्जी करेंगे, सिर्फ उन्हीं किसानों को बेदखल किया जाएगा.
سو دا فریگمنٹس آف لینڈ ور کمبائنڈ انڈر اے نیو اسکیم. ایک نئی اسکیم بنائی گئی جس کے تحت زمین کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو آپس میں جوڑ دیا گیا اور اس اسکیم کو کنسولیڈیشن آف لینڈ کا نام دیا گیا. کنسولیڈیشن مین جوائننگ، زمین کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو آپس میں جوڑ دینا. حکومت نے زمین کے چھوٹے چھوٹے قطعات کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک نئی اسکیم شروع کی جس کو اشتمال اراضی کا نام دیا گیا. And the next one, financial aid was given to the Anjuman Imdad Bahmi to support the mechanized farming in Pakistan and its services and work were recognized. Financial mean پیسے کے اعتبار سے مدد کرنا، مالی مدد کرنا، پیسہ دے کے مدد کرنا. ایک پاکستان میں آرگنائزیشن ہے، ادارہ ہے جو کسانوں کی مدد کرتا ہے جس کو انجمن امداد بہمی کہا جاتا ہے، اور یہ کسانوں کو ٹریکٹر وغیرہ میکانائزڈ فارمنگ کہتے ہیں، مشین کے ذریعے جو فارمنگ کی جاتی ہے، جو کاشتکاری کی جاتی ہے، اس کو بڑھانے کے لیے، انکریز کرنے کے لیے یہ ادارہ کام کرتا ہے. سو اس کے لیے کچھ رقم محدود کر دی گئی، مختص کر دی گئی، حکومت نے کچھ رقم اس کے لیے طے کر دی. سو نمبر 10 از فار دا پرچیز آف ایگریکلچرل مشینری لائک ٹریکٹرز لونز ور گرانٹیڈ ٹو دی فارمرز اینڈ لینڈ لارڈز آن ایزی انسٹالمنٹس. سو کسان وغیرہ کے لیے ٹریکٹر اور دوسری زرعی مشینری خریدنے کے لیے حکومت نے کسانوں اور زمینداروں کے لیے آسان اقساط پر قرضے دینے کے لیے کچھ اقدامات کیے، قرضے دینے کی ایک اسکیم اسٹارٹ کی. سو ڈیئر اسٹوڈنٹ، دس از ٹوڈیز لیکچر. یو ول لرن agricultural reform. This is your today's diary. So thank you for today. Have a good day. Thank you. Allah Hafiz. So till the next lecture, goodbye.